Hello students, I am Nidhi Srivastav from NIT Pharmacy Institute, which is affiliated by Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. Today I will deliver the lecture on acid-base concept, which is included in Pharmaceutical Analysis First in B.Pharm first semester. The subject code is BP102T. So, firstly, I will discuss the introduction of acid and base. What is acid? An acid is a chemical substance, usually a liquid, which contains hydrogen and can react with other substances to form salts. Acid आपका एक chemical substance है जो कि basically liquid form में होता है और जब ये किसी other chemical substance के साथ react करता है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है. सम एसिड्स बर्न और डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस दैट दे कम इनटू कांटेक्ट विद इट. कुछ एसिड्स किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं. द एग्जांपल्स ऑफ द एसिड्स आर मोस्ट सिट्रस फ्रूट्स, टी, बैटरी एसिड्स, विनेगर, मिल्क, soda, apples. Now, what is base? A base is a substance that can neutralize the acid by reacting with hydrogen ions. Most bases are minerals that react with acid to form water and salts. कुछ बेस आपके जो बेसेस होते हैं वो आपके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और जब वो एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं विद द रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयंस. सम बेसेस आर मिनरल्स विच रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट. तो आपने एसिड और बेस में एक इक्वल देखा होगा कि एसिड एंड बेस बोथ आर रिएक्ट विद ईच अदर, दे कैन फॉर्म सॉल्ट. बेसेस इंक्लूड्स द ऑक्साइड, hydroxide and carbonates of metals. The soluble bases are called alkalis. For example, common household bases include baking soda, lye, ammonia soap and antacids. Now, properties of acid and base. There are some properties of acid and base. Acids have taste sour, react with some metals to give of hydrogen gas, conduct electricity in solution. एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, रिएक्ट करते हैं जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन. क्या होता है जब बैटरी वगैरह में जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, कंडक्टेंस प्रोड्यूस करते हैं. इसी तरह से बेसेस हैज टेस्ट बिटर, फील स्लिपरी, डिसॉल्व फैट एंड ऑयल. बेस जो होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है, थोड़े से स्लिपरी फॉर्म में होते हैं, फैट एंड ऑयल में डिसॉल्व होते हैं. अब हम एसिड एंड बेस को कैसे मेजर करते हैं? सो वी कैन मेजर द एसिड एंड बेसेस बाय द पीएच स्केल, बाय द पीएच नंबर. एक्चुअली क्या होता है, पीएच स्केल जो होता है वो आपके एसिडिक और बेसिक दोनों सब्सटेंस को अकॉर्डिंग टू द पीएच नंबर बताता है. जैसे पीएच स्केल जो होता है वो होता है आपका 0 to 14. अब इसमें एसिडिक अगर हम देखते हैं कि एसिडिक सब्सटेंस कौन से हैं तो उनका जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है और अगर बेसिक की बात करें तो उनका पीएच जो होता है वो 7 से ज्यादा होता है. अगर 7 पीएच नंबर है सो द कंपाउंड और द सब्सटेंस इज द न्यूट्रल. ओके, तो यहां हम देखेंगे कि एसिडिक सब्सटेंसेस हैज पीएच लोअर देन 7 एंड द बेसिक कंपाउंड्स हैव पीएच larger than 7 and the 7 is a neutral. Now, difference between acid and base and salt. तो सबसे फर्स्टली हम जैसे कि एसिड और बेस को डिफरेंस देखते हैं तो सबसे पहले उसमें कौन से आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं
उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. So there is we can see HCl produce H plus ion, or H plus ions produces solution is acid. So HCl is acidic, and NaOH produces OH minus ion. So we can say NaOH is a base, and when Cl minus and Na plus ion combine to each other, they can form salt. We can see that H plus ion produces acid, so HCl is a acid. NaOH produces OH minus, so NaOH is a base. When Na and Cl minus combine with each other, they form salt, and NaCl dissociate into Na plus and Cl minus. So acid donates a proton, means H plus ion, release H plus in water, bases accept a proton and releases OH minus in water, and the salts dissolve in water bound ionically is not classified as an acid or base using the definition above. So this is the difference between acid and base and salt. फिर इसके बाद नाउ हम देखते हैं कि एसिड एंड बेस में डिफरेंस के साथ साथ कुछ कंपैटिबिलिटी भी होती हैं, कुछ चीजें इक्वल होती हैं. तो पहले हम डिफरेंस एक बार फिर से यहाँ पे देखते हैं. एसिड हैज सोअर टेस्ट, बेसिस हैज बिटर टेस्ट. एसिड is watery and base is slippery feel. Acids turns blue litmus paper red, bases turns red litmus paper blue. Acid react with carbonate to form CO2 bubbles, carbon dioxide bubbles, but bases don't react with carbonate. Acid react with metals to form hydrogen gas, but base does not react with metals. Acid react with bases, base react with acid. Acid separates into hydrogen ions H plus in water. Base separates into hydroxide ion in water. Acids has pH lower than 7 and bases has pH higher than 7. So this is the difference between acid and base. Now what is the common of the acid and base? Both are react with the litmus paper, both are compounds, both are release ions in solution, form salt and water when combined. So this is the compatibility with acid and base. Now I will discuss the concept of acid and base. The concept of the acid and base based upon the three theories: Arrhenius theory, Bronsted theory, and Lewis acid base concept. So first is Arrhenius theory. According to the Arrhenius theory, an acid is a substance that contains hydrogen and produce H plus ion in aqueous solution. This is the reaction. HCl in aqueous solution means HCl when react water, it produces H plus ion. When it dissociates H plus and Cl minus. Bases. A base is a solution that contains the OH group and produces hydroxide ions in aqueous solution. So now we can see the reaction of NaOH in aqueous solution. It produces Na plus ion and hydroxyl ion. H plus, so Arrhenius theory depends on the production of H plus ion and OH minus ion. When acid and base are combined, they can
they can form salt, or the reaction is called neutralization reaction. When strong acid and strong base are combined with each other, they can form salt, and that type of reaction is called neutralization reaction. So, neutralization reaction is defined as the combination of H plus ion with OH minus ion to form H2O molecules. H plus ion, which is produces from acid, OH minus ion, which is produces from base, and when they are combined, it forms H2O. So, H2O is in neutral form, and the neutral substance pH is 7. Now, Bronsted-Lowry theory. This is the second theory of the acid-base concept. According to the Bronsted-Lowry concept, any substance donating a proton is called acid. Acid is a substance which can donate the proton. In there, H plus is indicate as a proton. So, according to Bronsted-Lowry theory, acid donate the proton, means acid is a proton donor. So, in there, the example of HCl in aqueous solution, it produce H plus ion. H plus means this is proton. Bases are the substance accepting a proton. According to the Bronsted-Lowry theory, bases are accept the proton, means bases are the proton acceptor. In there, H2O acts as a base in aqueous solution, and it H2O accept the proton and form the hydronium ion. Okay. So, in there, base is H2O act as a base. So, an acid-base reaction is the transfer of a proton from an acid to a base. So, according to the Bronsted-Lowry theory concept, acid-base reaction fully depend on the transfer of the proton. If proton accept by any other substance, so it is base, and proton is donated by the any chemical substance, so it is acid. According to this concept, that an acid is a substance that tends to lose proton, and a base is a substance that tends to gain proton. According to the above definition, the acid and bases are related as. अब हम रिएक्शन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट. तो एसिड को इंडिकेट किया है ए के थ्रू, और एसिड जो है वो डिसोसिएट होता है एक तो प्रोटॉन में, और दूसरा जो इसमें डिसोसिएशन होता है वो होता है कॉन्जुगेट बेस का. अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, the second dissociating ion is act as a conjugate base in the acidic substance, means A is acid and it dissociate into proton, and this is the conjugate base. Okay. So, Bronsted-Lowry theory concept also related as a conjugate acid base system. Conjugate pair. What is conjugate pair? The acid is the acid A and the base B are said to form a conjugate pair. Every acid has its conjugate base and every base has its conjugate acid. क्या होता है जब एसिड की अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, अगर हम एसिड की बात करते हैं, जैसे कि HCl का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो HCl जब डिसोसिएट होगा तो एक तो वो प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा, दूसरा जो वो क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा, तो क्लोराइड आयन जो होगा वो यहाँ पर एक कॉन्जुगेट बेस की तरह वर्क करेगा. कॉन्जुगेट बेस का मतलब है जो क्लोराइड आयन है वो एसिड में अटैच रहेगा, और जैसे ही एसिड डिसोसिएट होगा वो क्लोराइड आयन बाहर आ जाएगा. तो इट मीन्स
क्लोराइड आयन वहां पे एज अ कॉन्जुगेट बेस वर्क कर रहा है इन द Bronsted-Lowry concept. Such pairs of substances which can be formed from one another by the gain or loss of proton are known as conjugate acid base pair. ऐसे पेयर्स को जिसमें प्रोटॉन का लॉस हो रहा है या प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है, इन्हें हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी एसिड है उसका एक कॉन्जुगेट बेस होता है, और जब बेस होता है तो उसका एक कॉन्जुगेट एसिड होता है. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड. अब अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो एसिड्स और जो बेस यूज करते हैं उनको हम ब्रॉन्स्टेड एसिड या ब्रॉन्स्टेड बेस बोल सकते हैं. सो इट हैज टू टाइप, मोनोप्रोटिक एसिड एंड पॉलीप्रोटिक एसिड. मोनोप्रोटिक एसिड capable of donating one proton, because as according to the Bronsted-Lowry concept, acid is a proton donor. So monoprotic acid capable of donating one proton. So we can see the example, hydrogen fluoride. In the hydrogen fluoride, it it donate only one proton, and F minus means fluoride ion is act as a conjugate base. Okay. So polyprotic acid, in polyprotic acid, mono means one substitution, one acceptance या one donation, and poly means टू या टू से ज्यादा अगर डोनेट कर रहे हैं प्रोटॉन को या एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो आपके आएंगे पॉलीप्रोटिक एसिड और बेस में. सो पॉलीप्रोटिक एसिड कैपेबल ऑफ डोनेटिंग two proton. H2SO4 is in their example, H2SO4 sulfuric acid. In sulfuric acid produce or donate two proton, and sulfate act as a conjugate base. So फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि what is Bronsted acid. According to the Bronsted-Lowry concept, acid is a proton donor, and in there two type of acid, monoprotic acid, polyprotic acid. So in monoprotic acid, acid has a capability of donating one proton, and polyprotic acid has a capability of donating two proton. And second ion is act as a Bronsted base in the Bronsted-Lowry concept. Now classification of Bronsted base. अब Bronsted base के according it is also two type, monoprotic base and polyprotic base. Monoprotic base means capable of accepting one proton, and polyprotic base capable of accepting two proton. So we can see that the example of SH and H plus, SH ion accepting one proton and form H2S, hydrogen sulfide, and in the polyprotic base capability of accepting two proton. So in there two hydrogen ion accepted by the sulfate ion and form H2SO4. जस्ट रिवर्स हो जाता है, रिएक्शन जो होती है रिवर्स हो जाती है जब प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर की बात होती है. और दूसरा यहाँ पर जो एसिड है वो एक्ट कर रहा है एज अ कॉन्जुगेट एसिड फॉर द बेस, क्योंकि हम यहाँ बेस की बात कर रहे हैं. जो भी एसिड सब्सटेंस है वो एक्ट कर रहे हैं एज अ कॉन्जुगेट बेस. जब एसिड में थे तो एसिड में जो बेस था जिसमें माइनस आयन लगा था वो एक्ट कर रहा था एज अ कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी कॉन्जुगेट बेस. नाउ लुईस थ्योरी कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी, an acid is any species that can accept a share in an electron pair and form coordinate bond. According to the Lewis concept, acid is a proton
acceptor. Okay, and when it can accept the proton, it forms the coordinate bond with the other chemical substances. And bases, a base is any species that can make available or donate a share in an electron pair coordinate bond and form coordinate bond. So base is a substance which can donate the electron and form the coordinate bond. So इस theory के according हम देख रहे हैं कि acid is the electron acceptor and base is the electron donor. So अब जो acid होता है according to Lewis theory, तो उसको हम बोल सकते हैं Lewis acid, और जो bases होते हैं उनको हम बोल सकते हैं Lewis base. Lewis base and electron pair donor and Lewis acid and electron pair acceptor. When Lewis acid and Lewis base are combined, they form adduct. So we can see the example. A Lewis acid and base can interact by sharing an electron pair. यहाँ example देख रहे हैं. NH3 is a Lewis acid. Sorry. NH3 is a Lewis acid and BF3 is a Lewis base. Why NH3 is a Lewis acid? NH3 is a Lewis acid and BF3 is a Lewis base. When Lewis acid and Lewis base are combined and transfer the electron, means donate the electron to boron, okay, and they form coordinate bond with each other. So in there NH3 donate the electron, means NH3 act as a Lewis acid and BF3 act as a Lewis base. Now types of acid. There are two types of acid, strong acid and weak acids. What is strong acid? Strong acids completely dissociates into ions in solution. For example, hydrochloric acid is a strong acid. It ionizes completely to form हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन. स्ट्रॉन्ग एसिड जो आपके होते हैं वो पूरे कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं इन वाटर एंड एनी अदर केमिकल सब्सटेंसेस. बट वीक एसिड इज एन एसिड दैट पार्शियली डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयन इन एन aqueous solution or water. For example, acetic acid, which is found in vinegar, and oxalic acid, which is found in some vegetables. So strong acids are completely dissociated, and the example of HCl और जब ionized होता है, it is completely ionized and produce hydrogen ion and chloride ion. But weak acid are not completely dissociate in water, and it form the carbonate ion, okay, and form dissociate only the non-polar solvent. It is not completely dissociated in the polar solvent, means water. And the example of the weak acid is acetic acid, which is found in vinegar, or oxalic acid, which is found in some vegetables. Examples of the acid, strong acids is hydrochloric acid, nitric acid, hydroiodic acid, perchloric acid, chloric acid. And the example of weak acid, sulfurous acid, methanoic acid, phosphoric acid, nitrous acid, hydrofluoric acid. So these are the examples of the strong acid and weak acid. Now the types of bases.
there are two types of bases, strong bases and weak bases. What is a strong base? A strong base is a base that is completely dissociated in aqueous solution. According to a strong acid, a strong base is also dissociated in aqueous solution. These compounds ionize in water to yield one or more hydroxide ion per molecule of base. For example, potassium hydroxide, sodium hydroxide. स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह स्ट्रॉन्ग बेस भी जो होते हैं वो फुल्ली कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और आयनाइज होते हैं वाटर में, आयंस प्रोड्यूस करते हैं. कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन. एंड द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस आर KOH and NaOH and other examples. And weak base, a weak base only partially dissociated into its ions in water. Ammonia is a good example of a weak base. So weak base is like weak acid. It is also partially dissociated in water, and ammonia is a good example of weak base. तो वीक बेस भी वीक एसिड की तरह ही कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते वाटर में, तो इनके लिए भी हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट का ही यूज करना पड़ता है. तो मींस वीक एसिड एंड वीक बेस बोथ आर soluble in non-aqueous solvent, ना कि aqueous solvent. The examples of the strong base: sodium hydroxide, potassium hydroxide, barium hydroxide, calcium hydroxide. And the example of the weak base: methylamine, aniline, pyridine, because these are the non-polar, these are dissociate into non-polar solvent. So फिर से हम पूरा एसिड बेस कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. एसिड बेस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द three theory: Arrhenius theory. Arrhenius theory is depend on the produces H plus ion and OH minus ion. According to the Arrhenius theory, acid is a acid produces H plus ion in aqueous solution and base produces OH minus ion in aqueous solution. But this theory is failed for the weak acid or weak base, because weak acid or weak base is not dissolve, not dissociate in the aqueous solution. फिर Bronsted theory. Bronsted theory based upon the acid is a proton donor and base is a proton acceptor. Now Lewis theory. Lewis theory depends upon the electron transfer theory, and in there acid is a electron acceptor and base is a electron donor. So in their example, NH3 is a Lewis acid and BF3 is a Lewis base. Thank you.